Hello everyone. I am going to tell you that how you have to check the student record in Corangle app. So first of all, you need to download Corangle application from the Google Play Store. I think you have got your profile as well. So अगर आपने पहले लॉगिन किया, आपने साइन इन कर लिया है, so you can directly log in, or in else you have to first of all sign up and then log in. Whenever you will be logging in, आपको एक इस टाइप की इंटरफेस आपके स्क्रीन पर दिखेगा. From these 3 points we have to select here the option of students. In students option you have to do 2 things. The first one is, first of all you have to check the students of your class, whether all the students are available or not. The second thing, one who have got removed from your class or whose section have got changed, please make a list of them so that we can shuffle them. So first of all, how you have to view and check the record of the students. So in this students option we have view all. So click on clicking on this option, we will get from here you have to select the class. Suppose I am selecting the class 11th from here. So from class 11th, now here I will have a list of students in class 11th. Out of this list, what you have to check is the name, student's name, father's, mother's name, their address as well. So for these things you have to check. Please check the spelling and font as well. एक बार आपको स्पेलिंग भी टैली करनी है एंड अलॉन्ग विथ स्पेलिंग आपको फॉन्ट्स भी चेक करने हैं, कैपिटल फॉर कैपिटल एंड स्मॉल. सो आफ्टर दिस व्हाट यू हैव टू डू, एक तो काम आपका ये है जहाँ से आप सभी बच्चों के रिकॉर्ड्स चेक कर लेंगे. जो भी बच्चे छूटे हुए हैं या जिनका सेक्शन चेंज है आप उनकी एक लिस्ट बना लीजिए. और सेकेंड थिंग, जो भी बच्चे रिमूव्ड है उनकी भी एक लिस्ट बना करके आप दे दीजिए तो वो भी रिमूव हो जाएंगे. एंड सेकेंड थिंग इज़ टू अपलोड देयर पिक्चर सो दैट वी कैन हैव दी ID कार्ड्स. आपको यहाँ पर स्टूडेंट वाले कॉलम में अपडेट प्रोफाइल का जो ऑप्शन है, उस अपडेट प्रोफाइल के ऑप्शन से फ्रॉम हियर यू हैव टू टाइप दी स्टूडेंट्स नेम. सपोज आई टाइप एनी ऑफ द स्टूडेंट्स फ्रॉम माई क्लास. सो हियर आई हैव द वन. So in this way you will get here the option for the student, select and upload image. So from select and upload image you have to just click here, directly click the picture from using your camera. You can directly click the picture. Be very sure that the picture should be passport size, and from here you have to click the picture. After clicking the picture you will get the upload option in the end. Upload it and it will be saved.